again this force will produce the moment in the clockwise direction. That will be -1 by 9 into 9, and this one is again 1 in the clockwise direction, again 1 equals to 0. So what will be our C? 0.111. So it will be 0.111. So this one is 0.111, and again when you calculate RP, it will be downward 0.222. So these reactions are same as in this beam. So now is this confusion clear? So this is how you do it, and we missed this shear force in the previous lecture. I didn't notice it as well. सर हम जो फिर वो इसको बीम को लोड करके हम कॉन्जुगेट बीम जो सॉल्व कर रहे थे, तो हमने इसमें भी इनिशियली जो है हमने इसको लाइक हाफ उस बीम को सेपरेटली लिया था और फिर हमने उधर से एक रिएक्शन निकाला था, फिर उसमें भी हम मोमेंट लेंगे कि नहीं? नहीं, उसमें मोमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि जो आपके पास इंटरनल हिंज है दैट कैन नॉट रेजिस्ट द मोमेंट, तो उधर हम कोई मोमेंट को लगा ही नहीं रहे कैपेसिटी, उधर से तो कैपेसिटी रिमूव ही होगी है, उसमें आपके पास सिर्फ रिएक्शंस आते हैं। जो सर प्लीज़ ये दोबारा बता दें, हम इंटरनल हिंज मोमेंट क्यों नहीं यूज़ कर रहे? क्योंकि जो इंटरनल हिंज है उसका बेसिकली थ्योरी ये है कि उस पॉइंट पे कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, या वो मूवमेंट इट शुड नॉट बी एबल टू रेजिस्ट मूवमेंट, लेकिन जब बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनती है तो उस पर मूवमेंट आता है। फॉर एग्जांपल ये है ना आपके पास इंटरनल हिंज, इस पॉइंट पे जब भी कोई इंटरनल सपोर्ट या फॉर एग्जांपल आपके पास रोलर था, तो अगर ये इंटरनल रोलर या इंटरनल हिंज आ जाती है आपके पास, तो उस पॉइंट पे मूवमेंट की कोई वैल्यू आनी चाहिए, राइट? उस पे मूवमेंट जीरो नहीं होता। अब हमने इधर इंटरनल हिंज लगाई है, अगर मैं इधर मूवमेंट ले लूंगा तो इसका मतलब है कि ये हिंज जो है मूवमेंट को रेजिस्ट कर रही है, और इसकी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जब बनेगी तो यहाँ पे मूवमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि जब हमारे पास इंटरनल रोलर और इंटरनल हिंज आती है तो उस पर मूवमेंट की कोई ना कोई वैल्यू होती है, राइट? तो इसीलिए जब हमने इंटरनल हिंज लगाई है तो इसमें सिर्फ रिएक्शंस होंगे, मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट ना होने का पर्पज ये है कि ये मूवमेंट रेजिस्ट नहीं कर सकता, और यहाँ पे कोई ना कोई मूवमेंट की वैल्यू आएगी बीम के अंदर, तो इस पे हम मूवमेंट नहीं लेंगे। ओके सर, थैंक यू। Okay, let's do it for shear force. Let's suppose we have the same beam. This one, this length is again 9 feet, 9 feet, 18 feet. And this is point D, A, B, and C. We have to plot the ILD for shear force at C, at D, sorry. सो अगेन जिस तरह हमने बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में किया कि हम इधर से भी रोलर गाइड लगा देंगे उस पे, या इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एंड अगेन वी विल हैव अ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट एट दिस पॉइंट, but since we are plotting the influence line diagram for shear force, so in this case we will apply unit shear force. So let's start with it. So this is the beam. Let's suppose these are the two shear force acting on it, and we will have two moments over here. This is 9 feet, 9 feet, 18 feet. Now we will apply unit shear force, and these moments are unknown. Let's call them as M dash and M dash. So again we will solve each part separately. This is A, B, and C. So what will be reaction RA? दानियाल, क्या होगा रिएक्शन?
सर एक दफा बता देना शेयर फोर्स के रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा। मोमेंट से तो हम चलो रिएक्शन वाले उसमें ऐड कर देते हैं, लेकिन शेयर फोर्स का ऐड करने से फर्क क्या पड़ेगा? ऐड क्या मतलब? मतलब ये 1-1 अगर शेयर फोर्स हम कंसिडर कर रहे हैं तो ओवरऑल हाँ, रिएक्शन पे तो इसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्यों नहीं पढ़ना चाहिए पर? सर। लेकिन जब हम मोमेंट ऐड समझे इस केस में हम मोमेंट तो हम ऐड कर देते हैं सिंपल। अगर मोमेंट एट ए ले रहे हैं तो हम 1 ऐड कर देंगे, लेकिन शेयर फोर्स का वन ऐड, मुझे वन ऐड की नहीं समझ आई। ऐड क्या मतलब है? मतलब हम इक्वेशन ऑफ मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू समेशन एट मोमेंट एट बी लेते हैं, सी लेते हैं, तो हम हाँ, अगर तो इसमें भी आप लो ना जरा, लो, फिर आपको पता लगेगा कि कैसे वो शेयर फोर्स का पर्पस क्या हो रहा है। एक फोर्स ही है ना आपके पास, ये वन जो है। ठीक है, अब लेट सपोज मैंने ए रिएक्शन निकालना है, मेरे पास ये बीम है, और लेट मी टेक द मोमेंट एट ए। सो इक्वेशन क्या होगी ए पे मोमेंट की? सही बल्कि हो मैं, सही हो सही हो गया। वन जो है फोर्स है, बिल्कुल ऐड हाँ, करेंगे। बल्कि ए पे लेने से नहीं होगा, इस पॉइंट पे लेने से होगा। लेट्स कॉल दिस एज बी और बी डैश। So sigma moment at B dash is equal to 0 RA into 9 in the clockwise direction and this moment M in the, बल्कि इसमें तो हमें ये भी करने की जरूरत नहीं है। ये रिएक्शन क्या होगा? वन ही होगा सर। इट विल बी वन। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन सिग्मा एफ वाई लगाओ सिंपल, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वन है और ये आ रहे अपवर्ड डायरेक्शन में वन होगा, राइट? अब ये मोमेंट कितना होगा? 9 हो जाएगा। So this वन। moment will be 9. Let me take the moment at point A. तो आपके पास आ जाएगा m dash काउंटर क्लॉकवाइज एंड दिस वन minus 1 cross 9 is equal to 0. So the moment will be 9. So ये moment अगर 9 है आपके पास, so this one is again equal and opposite moment. So this one will also be 9. और ये रिएक्शन कितना होगा at B? Now we will consider the right side of this beam, and the reaction at B will be, let's say we will take the moment at C equals to 0, and we will have RB, here we have RC. So one force is this one, 1 into 18 plus 9. And then we have this movement in the clockwise direction again, so that will be 9. And then we have this RB again in the clockwise direction, so that will be RB into 18 equals to 0. So what will be this RB? -2. So that will be minus 2k or minus 2. So that means it will be in the downward direction. What will be RC now? I will apply sigma +2 Fy equal to 0. ये प्लस 2 वाला कौन है? +1. ये स्नैन तुम्हारा जो है ना, एक नंबर माइनस है। सॉरी सर। ये माइनस है। ये आपका जब एग्जाम हो जाए ना, आपने मुझे याद करवाना, बल्कि आई विल रिमेम्बर। ओके, सो व्हाट विल बी आरसी? +1. That will be plus 1. So now we have all the reaction, and again we need to, the formula is to calculate the deflection at any point and deflection at point on for which we need to plot the ILD, and the, and when we divide these two factors we will get the ordinates of the influence line diagram. Again we have to plot the bending moment diagram for this beam, and then we will load our conjugate beam with that particular bending moment diagram. So again, if I combine this one, we will have 1 over here
2 in the downward direction and then 1 in the upward direction. And its bending moment diagram will be something like this. What will be this component? 18. So that will be 18 over EI, or this is M over EI diagram. And then this is A, this is B, a roller support, and this is a hinge support. अब इसमें एक confusion है, not a confusion, it's just another concept. अब if you remember, अगर हम अभी इसकी deflected shape बनाएं, ये deflection shape बनाएं, तो that will be something. यहाँ पे आप यूनिट रोड लगाओगे, यहाँ पे आप यूनिट रोड लगाओगे, और इसकी deflected shape will be something like this one. This. Something like this one. अब इस पॉइंट पे इफ यू रिमेम्बर जो डिटर्मिनेट बीम्स भी थी हमारे पास, जिस पॉइंट पे हम शेयर फोर्स बनाते थे उधर दो वैल्यूज होती थी, एक नेगेटिव वैल्यू होती थी, एक पॉजिटिव, या दो डिफरेंट वैल्यूज जो कुछ भी हो सकती हैं, वो जरूरी नहीं है कि दे विल बी सेम, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ इनडिटरमिनेट बीम्स। अब अगर आप इस बीम में देखो, तो इस बीम में फॉर एग्जांपल ये डी पॉइंट है जिसके लिए हमने इन्फ्लुएंस डायग्राम बनानी है, तो इस पॉइंट पे आप एक डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी सिंपली, अगर ये कॉन्जुगेट बीम है हमारे पास, इसका आप मोमेंट निकालोगे इस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, और वो आपके पास एक डिफ्लेक्शन की वैल्यूज आ जाएगी, लेट्स सपोज वो 10 आ जाती है, ठीक है। अब वो 10 वैल्यू तो आपके पास आ गई, लेकिन हमें इस पॉइंट पे दो वैल्यूज चाहिए। अब इस पॉइंट पे दो वैल्यूज कैसे आएंगी? अगर हम अपने यूजुअल कॉन्सेप्ट से चलें तो हमारे पास तो दो वैल्यूज कभी भी नहीं आ सकती। डी पॉइंट पे एक ही वैल्यू होगी, और वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू कोई भी हो सकती है, 10, 20, 30 एंड 40। अब जो ये मेथड डिवाइस हुआ, ये कॉन्जुगेट बीम या शेयर फोर्स कैलकुलेट करने का, उसमें ये इशू आ रहा था कि इस पॉइंट पे कोई एक वैल्यू नहीं दो वैल्यूज नहीं आ सक रही थी किसी भी तरह, या हमें क्योंकि दो वैल्यूज चाहिए उसकी एग्जैक्ट शेप प्लॉट करने के लिए। तो ये जो मुलर प्रपोज अ स्मॉल चेंज इन दिस मेथड, एंड उसने ये कहा कि इस पॉइंट पे जब हम इसको कॉन्जुगेट बीम बनाएं, तो जिस पॉइंट पे हमने आईएलडी बनानी है शेयर फोर्स के लिए, तो उस पॉइंट पे एक रैंडमली हम एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मूवमेंट कंसीडर कर लें एज एन एक्सटर्नल रिएक्शन, या एज एन एक्सटर्नल फोर्स, या एक्सटर्नल अननोन, कोई भी अननोन फोर्स। सो एक अननोन मूवमेंट हम जिस पॉइंट पे at point for which we need ILD for shear force। अब इस अननोन मूवमेंट को कंसीडर करने से क्या होगा कि D से इमीडिएटली लेफ्ट साइड पे आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, और उस वैल्यू में आपके ऑब्वियसली ये मूवमेंट कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट तो डायरेक्टली डी पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है। और इसी तरह इमीडिएटली राइट साइड पे भी आप एक वैल्यू निकालोगे इस डिफ्लेक्शन की, और उसमें ये मूवमेंट भी कंसीडर हो जाएगा, एंड यू विल गेट टू वैल्यूज फॉर shear force। एंड ही सेड कि जो इस मूवमेंट को अप्लाई करने से shear force की वैल्यूज आती हैं, वो दे आर टू क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यूज। ऑब्वियसली ये भी एक ट्रायल एंड एरर की बेस पे उसने ये मेथड प्रपोज किया, लेकिन उसने कहा लेट सपोज कि अगर एक्चुअली आईएलडी की वैल्यूज 0.22 आती है, तो इस कॉन्सेप्ट के लगाने से हो सकता है वैल्यू 0.198 आ जाए, लेकिन ये दो वैल्यू टू वैल्यूज, if you can see that these two values are quite close to each other, दोनों सर आपकी आवाज कट गई है। आवाज नहीं
Can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अच्छा, इस चीज की समझ आ गई ये मोमेंट हमने क्यों लिया? यस सर। सर ये क्लॉकवाइज ही होगा हमेशा? Yes, it should be in the clockwise direction. So now let's do the calculation. And in the conjugate beam, obviously you know that internal roller we will replace with the internal hinge. So this is our conjugate beam, and we have to calculate again the deflections and moment, just like we used to do in the case of reaction or in the case of bending moment. So let's divide this beam into two parts again. This is the moment at point D. These are the reactions. Obviously, this will be 0. Let's call this force as B. And what else? This is 18 over EI. This is the unknown RC. So what will be reaction RC? Just do the calculations. This distance is 18 feet. नवीद, ये क्या होगा रिएक्शन? Yes, sir. रिएक्शन क्या होगा RC? 162. 162. कैसे? Area. कैसे होगा 162? आपके पास दो अननोन फोर्सेस हैं. 54. 54 वाला कौन है? How much? Minus 54. So it should be minus 54. So कैसे होगा ये minus 54? Let's say we take the moment at this point C. पहले तो ये force कितनी होगी? That force will be 18 over EI multiplied by half, and the length is 18 feet. So what will be this force? This will be 9. 18 into 9. What is that? 162. 162 over EI. So this is our force. This is our force, and third force is this RC. What will be this lever arm? So 18 by 3. So that will be 6 feet. So if I take the moment at this point P, that will be RC into 18, and then this 162 again, 162 into 6. So RC will be 54 or minus 54 over EI. So this is how you calculate RC. And नवीद, अब ये बताओ कि RB क्या होगा? अच्छा,
अच्छा सर, 1 मिनट दें बस। सर आई एम सॉरी, तो फिर समझा देंगे -54 और ये कैसे आया? इसको सॉल्व कर लो ना इस इक्वेशन को। ये 162 × 6 इस साइड पे चला जाएगा डिवाइडेड बाय 18। तो क्या आंसर आता है? 54। हमारा क्या आंसर है? नहीं देखें, आप सेंटर से पहले आपने निकाला था वो 162 और ये आ गया, सही है, वो पर फोर्स आ गई है, ठीक ट्रायंगुलर फोर्स है। सही। और फिर उसके बाद आपने उसको मूवमेंट आर्म से मल्टीप्लाई करती है। बी पॉइंट पे मैं मूवमेंट ले रहा हूँ, राइट? जी जी तो इसके मैंने मूवमेंट आर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, वो 6 फीट था। हाँ जी, ठीक, चलें ठीक हो गया, थैंक यू सर, थैंक यू। तो नवीद आरबी कितना है? 54 सर। आरबी भी 54 है, कैसे? समीशन एफ वाई कर ना। एक आपके पास फोर्स ये है 162 ओवर ई आई, एक फोर्स आपके पास ये है -54 ओवर ई आई, एक फोर्स आपके पास ये है आरबी। सो आरबी कितना होगा 108। इन अपर डायरेक्शन और डाउनवर्ड? पॉजिटिव और नेगेटिव? अरे पॉजिटिव है ना यार, पॉजिटिव सर, तो ये आपका डाउनवर्ड्स होगा ना। सॉरी, पॉजिटिव डाउनवर्ड होता है? डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगा सर। कैसे? आवाज आई सर आपको मेरी? डाउनवर्ड कैसे होगा? नेगेटिव है ना सर। So this is -108, so it should be in the downward direction. अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पे एच पॉइंट पे जो फोर्स होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? हसनैन? जी सर। इस पॉइंट पे जो फोर्स होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? सर पॉइंट नजर नहीं, पॉइंट दिखाएं कोई। दिस वन। तो 108 होगा सर, प्लस। किस डायरेक्शन में? प्लस का क्या मतलब होता है? अपवर्ड और डाउनवर्ड? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा ना। So this will be 108 over EI. अब इसमें हमारे पास फिर से दो अननोन है, एक ये मोमेंट एंड अगेन दिस रिएक्शन. Let's, this is RA. So what will be the reaction RA? This is again 18 over EI. What will be reaction RA? अब्बास कितना होगा? हारून तुम बताओ ना। सर 54। कैसे 54? सर जो राइट साइड पे था वही वाली सारी चीजें लेफ्ट साइड पे हैं, तो क्या 54 होगा? -54 होगा। यार कितना सोचते हो तुम? जो राइट साइड में था वही सारी चीजें लेफ्ट साइड में, मतलब ये किसने आपको सिखाया है कि वही सारी चीजें हैं लेफ्ट साइड पे? राइट साइड पे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 108 था। -270। -270 सर। कैसे? ये तुम्हारा -10 हो गया। ओके सर। ठीक है ना? तो अब बताओ कैसे आया -270? सर समेशन ऑफ फोर्सेस है। कौन सी फोर्सेस? सर 1 मिनट। तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा ये ट्रायंगुलर लोड जो है?
सर ये तो 162 होगा ना? So this is 162 over EI. Sigma FY करो, RA plus 162 plus ये सर 108. ये मैंने आपको कहा था, इसी क्या कहा था आपने? कि सर समेशन ऑफ फोर्सेस से होगा -270 माइनस 270 over EI. अब बताओ MD कितना होगा? 1 मिनट चलेगा, कैलकुलेट करो। Let's take moment at point B for this beam. So we will have this moment in the counterclockwise direction. So that will be 270 into counterclockwise, and this distance is 18, this lever arm. And this 162 is in the clockwise direction. So that will be 162. What will be this lever arm? 1 by 3 of 18. Again, this will be 6 multiplied by 6, and then we have third force as movement in the clockwise direction. So this will give us, what will be MT now? Anyone? सर मेरे ख्याल से व्हाइट बोर्ड स्टक हो गया। अब नजर आ रहा है आपको? नजर आ रहा है, लेकिन आप जो लिख रहे थे समेशन मोमेंट एट बी इक्वल टू 0, उसके बाद शायद नहीं नजर आ रहा मुझे। सबके साथ यही इशू है या? यस डिले आ रहा है सर आपके लिखने में और बोर्ड के नजर आने में। Let me do it again. अब नजर आ गया? So what will be MD now? सर 3888 So that is 3888 over EI. Actually, there is an EI with every term, so don't forget this one. So we have MD as 3888 over EI. So coming back to our original, let me just combine these two beams now. So we have this beam and for this one we have this reaction as 270 over EI, and at point B or D we have this moment as 388 over EI, and at this point we again have a reaction in the downward direction as 54 over EI. And over here obviously we have two forces if we separate them, and those forces are on the left side we have upward, and just remember that there are two forces, one over EI and then in the downward direction again one. Or I can just separate it for our convenience. Over here we have 108 over EI, and then on the right side we have in the downward direction 108 over EI. Sir, again, I think whiteboard stuck है. This one is, can you see it now? Not yet, sir. अब?
Any better? जी सर अब नजर आ रहा है. So what will be अब हमने simple ये apply करना है shear force के components. To calculate those components we have, again we need the deflections at different point and deflection at point for which we need to plot the influence line diagram. So these deflections are equal to moments obviously. So let's calculate the moment first at point or just to the left of point D. At point A obviously the moment will be 0. At just left of point D, what will be the moment? We can use this beam again. So can you give me the moment? Khizar, Yes, sir. क्या होगा इधर moment? Just to the left of point D. Sir, ये distance कितना होगा from 270 to left of point D? This is 9 feet and this is 9 feet. Just to the left distance 9 feet ही होगा. बस पर्पस ये है कि हम उसमें ये moment consider नहीं करेंगे और right side में हम consider कर लेंगे. This is 18 over here. Sir, will it be 2430? 2430 कैसे? Sir, 270 into 9. और उसके बाद ये फोर्स भी है आपके पास, ये ट्रायंगुलर फोर्स है, Yes, sir. तो इसको भी तो कंसीडर करना है. Sir, 2997. 2997 कैसे? Sir, I think I made a mistake. सोचो. Anyone else? पहले ये बताओ ट्रायंगुलर फोर्स हम लेंगे कितनी? अगर तो हम फुल ट्रायंगल कंसीडर करें तब तो हमारे पास 162 ओवर ई आ जाती है. But we don't have to consider the full triangle because जब हम bending moment diagram बनाते हैं तो जिस point पे let's suppose इस point पे moment निकालना है तो left side की forces consider करनी है मैंने. तो left side पे मेरे पास इतनी triangle आ रही है, this one. तो मैंने इस triangle को resolve करना है. So what will be the force? That will be half. Sir, ये वो similar triangle, So similar 40.5. triangle से हम ये वाला distance find कर लेंगे, इसका height find कर लेंगे. Yes. So this component that will be again 9 over EI. So half 9 over EI multiply by this distance is 9. So that will be 40.5. how much? 40.5. 40.5. So this is 40.5 over EI. और इसका ये लीवर आर्म कितना होगा? 1/3 of 9. So that will be 3 feet, right? So this will be 3 feet. Yes, sir. So what will be the bending moment at this point? Bending moment कितना होगा यहाँ पे? So 270 over EI in the counterclockwise direction. Let's take it as negative for now. And the distance is 9. Then this one is clockwise. So that will be 40.5 over EI. And the distance is 3 equals to 0. So कितना आया है? In 0 नहीं equals to moment होगा. So what will be this value? 2308.5. So that will be positive or negative? Sir, negative. Negative 2308 over EI. और अब मैंने अगर उसके राइट साइड पे कैलकुलेट करना है जस्ट टू द राइट ऑफ पॉइंट डी, सो अगेन ये दो वैल्यूज तो वही रहेंगी. सो लेट मी राइट इट ओवर हियर. सो दैट विल बी -2308 ओवर EI और उसमें ये मोमेंट एक ऐड हो जाएगा. सो दैट विल बी 388
over EI. So what will be the value? $1580. So that will be 1580 over EI. ठीक है, सो हमारे पास दो ऑर्डिनेट्स आ गए हैं. ए पे भी आ गया, डी पे भी आ गया, और अगेन और किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है. लेट्स कैलकुलेट ऑन दिस पॉइंट ई. सो व्हाट विल बी द मोमेंट एट पॉइंट ई? इस पे क्या मूवमेंट होगा? सर ये पॉइंट ई कौन सा है? दिस Like, वन. ये क्वेश्चन में तो नहीं गिवन था. ये हमने खुद से डिफाइन कर लिया ना, सेंटर पे है. सर इसको लेफ्ट पे रहना है, राइट पे? ई पॉइंट पे. इस पे तो कोई मूवमेंट नहीं ना है, उसके लेफ्ट या राइट का कोई वो नहीं. सर हम ई पॉइंट पे क्यों ले रहे हैं? आप इस पे ले लो किसी भी पॉइंट पे. मतलब आपने डायग्राम बनानी है, जितने ज्यादा कोऑर्डिनेट्स होंगे उतनी एक्यूरेट डायग्राम होगी. सर 364.5 over EI. कैसे है? Sir 54 over EI into 9 minus 40.5 over EI into 3. So that will be 54 over EI into 9. And again clockwise, जिस तरह हमारी कन्वेंशन है. अगर आप राइट साइड से चलोगे तो आप ऑपोजिट कर दोगे उसको. So this will be minus 54 over EI into 9, and then this will be 40.5 over EI again, and this distance is 3. So that will be 40.5 over EI into 3. So क्या value? Minus 364.5 over EI. So ये पॉजिटिव है वैल्यू. positive कैसे है? This is negative, no? ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा ये बताएं. Can you hear me? सॉरी, नेगेटिव है. Negative. So we have this as minus 364.5 over EI. And now अगर हमने किसी और पॉइंट पे, तो let's just calculate the movement at point B. So that will be, क्या होगा वो movement at point B? लेफ्ट साइड से भी चल सकते हैं, राइट साइड से भी चल सकते हैं. So let's start with the left side. So we have minus 270 over EI into 9. And इस केस में हमें पूरी ट्राइंगल कंसीडर करनी है. So that is 162 over EI, और उसका लीवर आर्म again was 1 over 3 into 18. So 6. So minus 270 over EI into 9 plus 162 over EI into 6. And then again we have this force of 3,888. So that will be in the clockwise direction. So what else? So these three forces. So what will be the bending moment at point B? कितना होगा? Sorry, this should be 18. Again, B point be like this. 0 आ रहा है. 0. So the bending moment or delta B should be equal to 0. Now we have different values. We need to apply this formula. By the way, what should be delta D?
388. So that is 388 we already. So at distance 0, then we will calculate at 9, 18, 27, and then again 36. So at point 0 or at point A, this component was 0, so this value should be equal to 0. Then at a distance of 9, or just to the left, we have two values actually over here. So I should write it at D. D left and D right. 18, 27, and 36. So just to the left of point D, we calculated this delta D as 2308. So that will be minus 2308 actually, 388. So what is the component of shear force? What will be the value over here? .59. So that is, it should be negative. This is negative. So that is minus 0.594. What about this? How much? So the deflection was 1579, positive 1579, and the value will be how much? 0.406. So that is 0.406. Then at 18 feet or at point B, we calculated this deflection as 0. So the value will be 0 again. Then at point E, we calculated this value as minus 364. So what will be the value at this point? And this one is 0. What will be this value? Minus 0.09. Minus 0.093 or 094. So now we have all the ordinates of influence line diagram. And if I plot this on the beam, this is point D, this is point B or E. This is A, B, and C. So we have over here minus 0.594 and also 0.406, and over here we have minus 0.0938. And if I combine all these points, I will get something like this shape. At B we have 0, and at C we will have again 0. So this is the influence line diagram for shear force at point D. So this is how you do it for any point on this beam. So this is it, and if you have any question about this example, you can ask me now. सर Yes. सर ये डेल्टा डी आपने जो है वो 388 क्यों लिया? ये हमने ये मोमेंट कैलकुलेट कर लिया था ना डी पॉइंट पे, दिस वन, तो यही मोमेंट है। सर जो आपने आखिर में जो ILD की एसएफ की जो फोर्सेस निकाली हैं वो जरा एक दफा फिर समझाते हैं कैसे निकाली हैं? ये फार्मूला है हमारे पास, दिस वन, जिस पॉइंट पे निकालनी है उसकी डिफ्लेक्शन या उसका मूवमेंट और डी पॉइंट का मूवमेंट, मोमेंट्स ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन या मूवमेंट से मतलब डिफ्लेक्शन, तो वो कॉन्जुगेट बीम में वो मूवमेंट जो है वो डिफ्लेक्शन भी इक्वल होता है। यस सर। तो हमने मूवमेंट्स ये कैलकुलेट कर दिए हुए थे इधर। जी सर। तो इनको बस इनका वो डिवाइड करना है, तो यू विल हैव द कंपोनेंट्स, राइट? यस।
Any other question? एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर हम जो वो फोर्स मेथड में हम करते थे तो मतलब जो हमारे पास ये डिनोमिनेटर में डेल्टा डी डी आ रहा है, हमने जैसे हमने जब हम लोग ILD बर्निंग मोमेंट की बना रहे थे तो उसमें हम लोग यूनिट मोमेंट लगा रहे थे खुद, और फिर उसकी वजह से जो सारा जो उसका इफेक्ट आ रहा था। तो सर इसमें भी हम लोग ये डेल्टा डी डी 388 मतलब क्यों ले रहे हैं, जबकि हम मतलब हम लोग यूनिट लोड लगा रहे हैं। नहीं तो ये डेल्टा डी डी है क्या, पहले ये बताएगा। डेल्टा तो डी हम डी उस पॉइंट पे जो है, उस पॉइंट की डिफ्लेक्शन है। इनसे ये तो मतलब जो हम फोर्स मेथड पढ़ा था तो हम लोग हाँ खुद ये ठीक, लगाते हैं एक वन ठीक है। यूनिट लोड या इस तरह। अब ये देखें आप, ये जो हमने सारी इस पॉइंट की डिफ्लेक्शन निकाली है वो किस बेसिस पे निकाली है, वो उसी यूनिट लोड की वजह से निकली है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ये देखें यूनिट लोड लगाया था, राइट। ये जो भी बी पॉइंट है, डी पॉइंट है, राइट। ये जो यूनिट शेयर फोर्स लगाई थी, इसकी बेस पे हमने रिएक्शंस कैलकुलेट करके ये हमारे पास रिएक्शंस आ गए। अब ये हमारे पास बीम है और हमने इसी बीम पे निकाल लिया ना, इस बीम की हमें डिफ्लेक्शन चाहिए डी पॉइंट पे। बट सर हमने फिर इसमें खुद एक मोमेंट लगाया है ना, तो उस वो मोमेंट की हाँ, वजह से 388 वैल्यू आई है। उस मोमेंट तो उससे क्या फर्क पड़े, आप मतलब क्वेश्चन क्या भी आपका। सर क्वेश्चन यही है कि जो ये डेल्टा डी डी है तो ये तो उस वजह से आना चाहिए जो हम जो वर्चुअल यानी यूनिट लोड हम लोग लगा रहे हैं, तो ये वाला मतलब ये वाला ठीक है। मोमेंट है वो तो अच्छा, दूसरा है। आप लेट्स सपोज यहाँ पे मूवमेंट ये अभी इसको लेट्स फॉरगेट दिस वन, आप डी पॉइंट में मूवमेंट कैलकुलेट करें, वैसे क्या मूवमेंट आ जाता है। -308 समथिंग था जो टोटल मोमेंट था। डी पॉइंट में मूवमेंट आएगा क्या, तो यही सर मूवमेंट आएगा ना डी पॉइंट पे। ये जो है डी, ये जो मूवमेंट है ये वही मूवमेंट है ना, मतलब ये हमने कहाँ कैलकुलेट किया था। ये 388 कैसे डी पॉइंट, अगर लेट सपोज ये मूवमेंट नहीं है 388 और मैं आपको कह रहा हूँ डी पॉइंट में मूवमेंट कैलकुलेट करें, वो क्या वैल्यू आएगी उसकी। 270 over EI into 18 and then again हमने यहाँ कैलकुलेट किया था उसको। ये -2308 नहीं है। दिस वन, अच्छा, ओके, आई गेट इट। यही तो कंफ्यूजन थी ना उसमें। अगर हम डी पॉइंट पे लेट सपोज कि मैं इस मोमेंट को नहीं लेता, तो इससे इशू हो क्या रहा है बेसिकली। इससे इशू यही होगा, अगर मैं इस मोमेंट को कंसीडर नहीं कर रहा तो मेरे पास एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी इस पॉइंट पे एंड आई विल नॉट गेट। और यही यहाँ पे ये जो हमारी ये जो डिफरेंस है ये इसी वजह से तो है। या तो मैं 2308 ले लूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे जो कि सिंपली लेफ्ट साइड के मूवमेंट्स कंसीडर करने से आ रहा है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि इसमें लेफ्ट और राइट को मैं कैसे कंसीडर करूंगा। कोई तो मुझे एजम्पशन लेनी पड़ेगी ना इस क्वेश्चन में, जिस वजह से वो उसको डिस्टिंग्विश कर सकूं कि इस पॉइंट पे दो फोर्सेस आ रही हैं। ऑब्वियसली वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। 2308 लूंगा डी पॉइंट पे और फिर जब मैं डिवाइड करूंगा तो वन वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन मैं इस वन को दो हिस्सों में डिवाइड कैसे करूं, ये जो है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब इन दोनों का एब्सोल्यूट सम इज क्लोज टू वन, लेकिन मैं कैसे डिफाइन करूँ कि इस पे -0.594 भी एक वैल्यू है और 0.40 तो इसी को काउंटर करने के लिए तो ये मुलर ने ये मेथड प्रपोज किया। 2308, यस आप सही कह रही हो कि उससे एक एक्यूरेट वैल्यू आएगी, लेकिन फिर इस चीज को कैसे हम काउंटर करें कि हमें दो वैल्यूज चाहिए। तो हो सकता है कि अगर 2308 कंसीडर करने से कोई और मेथड लगाएं तो 0.22 एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, लेकिन इस मेथड से हम चल रहे हैं तो 0.198 आ रही है, तो उन दोनों में कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। सो वी हैव अडॉप्टेड दिस वन, राइट। यस सर।
बट सर फिर हम लोग 1580 भी तो ले सकते थे डिनोमिनेटर में, नहीं मतलब जो उनका टोटल सम है 1580 क्या चीज है? जो इसका टोटल सम है हमने -2308 और 3888 है। uh, 1580 this one जी और सर हम इसको डिनोमिनेटर में ले सकते हैं मतलब डेल्टा dt। अच्छा इसको डिनोमिनेटर में हम लें और फिर राइट साइड लेफ्ट साइड पे क्या वैल्यू लेंगे? लेफ्ट साइड की वैल्यू अच्छा आप कह रही हो इसको भी ले सकते थे तो मतलब ये तो इसीलिए तो हमने डिफाइन कर दिया कि ये राइट साइड है उसकी, मतलब एग्जैक्ट डी पॉइंट पे नहीं है, उससे 0.0001 राइट पे है। ठीक है सर समझ आ गया। ओके सर जो हमारे पास मूवमेंट एट डी लेफ्ट और मूवमेंट एट डी राइट है उन दोनों का सम 388 होना चाहिए। 388 मतलब I'm 3 not sure about this one, maybe एब्सोल्यूट सम हो सकता है, मे बी इन दोनों को ऐड करें तो हाँ वो 388 ही होगा क्योंकि ये माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, एब्सोल्यूट सम इनका 388 होगा। ठीक है सर। So any other question? एक्सक्यूज मी सर। जी सर हमने जो मोमेंट एट बी लिया, नहीं मोमेंट एट ई सॉरी, उसमें हमने इस बार क्लॉकवाइज को इसलिए नेगेटिव कंसिडर किया ना क्योंकि अब हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। जी सही है सर। okay, so this is your assignment, this 6th question 1041 to 1047. You can submit it by Monday because now we have time, so you can submit it by Monday, in coming Monday. I think the date is 11th. So this is from Hepler 8th edition. You can see the book for the questions. And if you have any question, you can just send me a message, and today I will try to respond to your previous questions. And if there are no further questions, then this is it from today's class, and we